Assalamu alaikum. I am Dr. Haya. I welcome to all on the MMK Hub Masters of Medical Knowledge. I hope you all are fine and doing well. We are starting with the renal physiology and on which we have completed our first lecture, and this is the second lecture of the renal physiology in which we are discussing. These are the learning goals. At the end of the lecture, students must know these goals. Today, the fifth and the last goal is clinical physiology. So these are the glomerular diseases. First disease is glomerulonephritis. ठीक है? It is the disease जो primarily involve करता है glomerulus को, and it is divided into primary and the secondary. Primary में हमारे पास क्या है कि glomeruli are the predominant site है, और secondary diseases में हमारे पास कुछ systematic and hereditary diseases आती हैं जो secondly इफेक्ट करते हैं. ठीक है? प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डायरेक्टली प्राइमरी से इफेक्टेड होगी और सेकेंडरी में हमारे पास कुछ सेकेंडरी कॉजेस होती हैं. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन डिजीजेस में 4 फीचर्स होंगे. प्रोटीनूरिया मींस प्रोटीन इन द यूरिन, हेमेटोयूरिया ब्लड इन द यूरिन, हाइपरटेंशन एंड द डिस्टर्ब हमारे पास एक्सक्रीटिव फंक्शंस. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंडीशंस, नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स एंड द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. में नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हमारे पास क्या होगा कि प्रोटीनूरिया, हेमेटोयूरिया, हाइपरटेंशन, एडिमा, ओलिगोयूरिया. ठीक है? और हमारे पास 10 to 20 डेज अर्लियर पहले ही हमारे पास इन्फेक्टिव इलनेस स्टार्ट हो जाएगी. हेमेटोयूरिया एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इनिशियली स्लाइटली हमारे पास होती है एंड हमारे पास गिव्स द यूरिन स्मोकी अपीयरेंस. दिस इज द पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा कि स्मोकी अपीयरेंस है तो इट इज द डिजीज कौन सी है? नेफ्राइटिक सिंड्रोम. और इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ प्रोटीनूरिया में आता है कि प्रोटीनूरिया यहाँ पर नेफ्राइटिक सिंड्रोम में माइल्ड होती है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज्यादा होती है. हाइपरटेंशन भी माइल्ड होगी, एडिमा भी माइल्ड होता है इन द एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, जबकि हमारे पास प्रोटीनूरिया ये सबसे ज्यादा होगा. ठीक है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम. यहाँ पर प्रोटीनूरिया ज्यादा है. सो इन द नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देयर इज अ लिटिल या माइल्ड प्रोटीनूरिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास प्रोटीनूरिया इज मोर है. हाइपोअल्बिनूरिया हमारे पास होगा, एडिमा, लिपिड्स हमारे पास ज्यादा होंगे और लिपिडूरिया, hypercoagulability. These are the features of the nephrotic syndrome. When we compare these points in the acute nephritic syndrome, proteinuria is mild and in the nephrotic syndrome it is heavy. ठीक है? और hypoalbuminuria it is uncommon in the acute nephritic syndrome but it is present in the nephrotic syndrome. edema भी हमारे पास nephritic में mild होगा but in the nephrotic में there is a mark. ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. The mechanism of edema in the acute nephritic syndrome, sodium water retention, while in the nephrotic syndrome decrease plasma osmotic pressure. Hematuria हमारे पास present होगी in the acute nephritic syndrome whereas in the absent in the nephrotic syndrome. Hypertension both are present होंगी. Hyperlipidemia there is no hyperlipidemia in nephritic syndrome but they are present in nephrotic syndrome. Lipiduria same, absent in nephritic, present in nephrotic syndrome. And oligouria they are present in both conditions. Hypercoagulability they are absent in nephritic and present in nephrotic syndrome. With this we achieved our complete learning goals. I hope आप लोगों को lecture अपना समझ आया हो. And thank you all for listening me. And with this we are ending our this second lecture of the renal physiology. Thank you all. Allah Hafiz.